जब सप्लीमेंट की बात करते हैं, एज पर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA. Okay, what do you mean by supplement? Now, as per law defines dietary supplement, which includes dietary ingredient and which is consumed through mouth. So anything which contains dietary ingredient and that is consumed by mouth, okay, that is considered to be dietary supplement. Dietary ingredient का मतलब क्या? What do you mean by dietary ingredient? Dietary ingredient का मतलब है whatever things that you eat, whatever that you are eating on daily basis. Very simple example, whey protein. Whey protein is a protein which is present in milk. So हम लोग जब milk पीते हैं, so milk में there are two types of protein. You have the whey and you have the casein. Whey is fast absorbed. It is considered to be fast absorbed protein, and casein is considered to be slow absorbed protein. Whey is fast absorbed, casein is slow absorbed. Are you getting what I am trying to say? Yes. जब आप दूध में से पनीर बनाते हो, तो जो पनीर होता है, that solid part, that is casein. And that water which is there, it contains whey particles. It contains whey. That is refined. That I will tell you how it happens. What is the entire process that I am going to discuss. So that is what is known as your dietary ingredient day to day. Correct है? उसमें से ये whey protein बनाया जाता है. So that is how supplement. That is what you call supplements. Dietary supplements. इसलिए उसका नाम है डाइटरी सप्लीमेंट. ओके, ऐसे बहुत सारे हैं. ओके, हम लोग अगर वे की बात करें, इज इट रियली इंपॉर्टेंट वे प्रोटीन लेना? इज इट एक्चुअली इंपॉर्टेंट? क्योंकि देयर आर व्हाट डू यू कॉल, नहीं मिक्स नहीं, देयर आर मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट पीपल व्हेन इट कम्स टू वे प्रोटीन. कुछ लोग बोलते हैं वे प्रोटीन नहीं भी लिया तो चलता है. Whey protein नहीं लोगे तो that does not mean that your body is not going to recover from exercise or protein synthesis is not going to happen. ऐसा नहीं है. Okay, ऐसा कुछ नहीं है. This is what some people believe. Then is whey protein better? Yeah, it is better. It is better in some way. How? Specifically in certain meals. Okay, especially post-workout meal. Post-workout meal. क्या होता है पोस्ट वर्कआउट में? व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्सरसाइजिंग? जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करते समय योर एंटायर ब्लड फ्लो इज टुवर्ड्स योर डिफरेंट ऑर्गन्स. करेक्ट? नॉर्मली व्हेन वी रेस्ट, द एंटायर ब्लड फ्लो इज टुवर्ड्स द एब्डोमिनल एरिया. मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो इज टुवर्ड्स द एब्डोमिनल एरिया. बट व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, द ब्लड फ्लो डाइवर्ट्स. Correct? Where will it go? It will go towards the skeletal muscle. It will go towards the cardiovascular system. Correct? It might even move towards the skin to maintain body temperature. ये सारी चीजें होगी. Post workout. First of all, number one, post workout. It is important that if you want to kickstart the process of protein synthesis, what I'm trying to say. If you want to kickstart the process of protein synthesis, so if you are going to kickstart the process of protein synthesis, the recovery will be faster. So if you want to kickstart the process of protein synthesis, it is absolutely important that you have something which is in simple form. You have something in simple form. Are you getting what I'm trying to say? Yes, sir. So udhar let's say if you have something like paneer, or if you have something like chicken, which is first class source of protein, that is not going to kickstart. That will not kickstart. Okay, kickstart, simple. So simple is what? Simple form is whey protein.
Correct? This is point number 1. Second thing is what? Second thing, दूसरा important चीज क्या है? Okay? Second thing is that post workout our insulin sensitivity is very good. Post workout जो है वो हमारी insulin sensitivity बहुत अच्छी होती है. Insulin sensitivity का क्या मतलब है? What do you mean by insulin sensitivity? The way your body responds or the way your cells respond to insulin. जिस तरीके से आपके बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं उसको बोला जाता है इंसुलिन सेंसिटिविटी. मतलब वर्कआउट के बाद में, एक्सरसाइज के बाद में, ओके, आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं. सो इफ द सेल्स आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू इंसुलिन, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी वेरी गुड. द एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी नाइस. इट इज द मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन. या तो उसको मैं बोलता हूं इट इज द एनाबॉलिक फेज, एनाबॉलिक ग्रोथ डेवलपमेंट. इट इज द मोस्ट एनाबॉलिक फेज.